माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, short duration discussion. Honorable members, notices have been received from the following members to raise a discussion on the economic situation in the country. Shri Derek O'Brien, Shri Mohammad Nadimul Haq, Shrimati Mosam Noor, Dr. Sashmit Patra, Shrimati Sulata Dev, Shri Niranjan Bishi, Dr. Sudhanshu Trivedi, Shri Rakesh Sinha, Shri Brajlal, Shri V. Vijayasai Reddy, Shri Masthan Rao Bida, Shri Ayodhya Rami Reddy, Shri Birendra Prasad Vaishya, Shri Ghanshyam Tiwari, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Shri Sushil Kumar Modi, Shri Aditya Prasad, Shri Shambhu Saran Patel, Shri Derek O'Brien. Thank you very much, sir, for allowing this discussion on an important subject to be taken up. Sir, a short duration discussion is a time where an opposition MPs get a chance to express ourselves. And we thank you not only for taking this discussion up, sir, because there is a tradition here to take one short duration discussion every week. Not only have you taken this discussion up, but the normal time for this discussion is 2.5 hours. And I've just noted that it's actually been expanded to 4 hours. So we appreciate that. And if this short duration discussion on an issue which is primarily put up by members of the opposition and of course and of the treasury benches, sir, I think it will go a long way in having a house running. You wanted to run 100% without any disruption. Let me, on behalf of my party, the Trinamool Congress, and I'm sure many of my colleagues from other parties on this side, share the view, not 100%, sir. Till 22nd December, we'll make it run for 102%. And give us one short duration discussion next week, where I'm told that over 100 MPs from 12, 13 different political parties want to have a discussion on the steps to be taken to strengthen cooperative federalism. We want to discuss this, sir, in a meaningful way. Now, on this subject. Sir, elections come and go. Some win, some lose. Sir, but the real winner after every election, besides, of course, the parliamentary democracy, are the people. And on the subject, sir, on the economy, which is the subject of our discussion, how is the economy looking? And I think it depends on whose eyes are you looking through. If you're looking at the economy this morning when you get up, and if you're into the stock market, you should be very happy. Some 69,000 at the stock market. Should be very happy. If you're looking at the economy through the eyes of the billionaires, you should also be very happy. And we have nothing against billionaires, may their tribe increase. From 142 billionaires in India 3 years ago, that number is now 169. Good. If you're looking at the economy through the eyes of the richest 1% of everyone in India, you should also be happy, because the richest 1% control some 40% of the total wealth. And since the finance minister is here, and thank you, ma'am, for being here, because
whenever we try and have some meetings with ministers, with our state government, the Minister of State is sent to meet us. So I really appreciate that the Minister herself is here. If you're looking at it through the eyes of the Finance Minister, you should also have not a bad Tuesday afternoon, thinking that the GDP is projected to grow at, or had 7.6% in the second quarter. Sir, but if you look at the economy through the eyes of any family, anywhere in the country, what will those eyes looking at the economy tell you, sir? Those eyes will tell you that from 2014 to 2023, the price of rice has gone up by 56%, the price of wheat by 59%, milk by 61%, tomatoes by 115%, or tur dal by 120%. Gas now has come down, but before the elections it came down. And there is a saying in Bangla, sir, Hajar takai ranna hocche bina poishar chal. You must have picked up some Bengali. Hajar takai ranna hocche bina poishar chal. In other words, the Prime Minister is giving you the gas, which is 1,000 rupees. The rice is free, but the gas is 1,000 rupees. Sir, if you look at this economy, and this is somebody I actually met, her name is Nupur Hati. She's from Hooghly district. Nupur Hati clutches on to her laminated job card because she hasn't received her Manrega wages. Or look at the economy through the 21 lakh workers who, like Nupur Hati, has worked, but it's been 2 years, even though she was guaranteed 15 days, she has not received these wages, adding up to some 15,000 crores. That's only one state. If you take all states, the number will be more. Or if you look at this economy through the eyes of any young man or young woman, and the economy, and he or she will tell you that 25% of youth unemployment. So through you, sir, I ask this government, has this wealth which has been created, has it been passed on equitably? Has it been passed on equally? And that's the point today, sir, of what we are discussing. Yes, you have your moments, give us all the numbers, but has it gone to the bottom of the pyramid? And that's the single point today, sir, of what I am trying to say. And tell us, Madam Finance Minister, rural inflation higher than urban inflation for the first time in 6 years. And this is not election rhetoric. These are hard numbers. Household savings depleting. It is at a 50-year low in 22-23. Farmer welfare. We have to ask ourselves, why are 150 farmers committing suicide every day? Sir, yes, let the stock market go up, let the billionaires go up, sir, but spare a thought, or more than a thought, for the marginalized, for the vulnerable. India has the world's highest number of poor people at 23 crores. This is what this debate on the economy should be about. The bottom 50% of our population possess only 3% of the wealth. Sir, and on a Tuesday afternoon in this plush-looking glitzy building, we must remind ourselves why 3 out of 4 Indians cannot afford a healthy, balanced diet. Or, worse still,
why 2 out of 3 children in India under the age of 5 die of hunger. Sir, this is not the time to talk about what happened 70 years ago and what happened 60 years ago. That's why, without doing any politics, we are presenting some numbers, and we want the government to address these issues and find solutions to these issues. Many promises have been made. I'm not going there today because on the promises and the delivery, I want to stick very, very clearly with the economy. Sir, the point which I make on this last... But I'll give you more time. Thank you, sir. Continue. Time allotted was I've got 12 3 minutes. minutes. They told me 12, so I don't know. No, 12 is there. 12. 12 is over. But continue. So while on the subject, nothing to do with this, you know, it's difficult for us to see the time because the timers are behind us. I'd request you to... You had made a suggestion, we are doing something about it. Thank you, sir. Sir, then let me conclude. Because we have to look at the priorities of this government. I started off my story with elections. Who wins? You win. Yes, BJP, you win elections. It's another matter when you fight us, you don't win elections, we win elections. So let's compare equals. You win, we win. You have an outlook on the economy. Mamata Banerjee's Trinamool Congress has an outlook on the economy. What's the difference in the outlook? So 1, 2, and 3 points. Indian economy is expected to grow at 7% in the current financial year. Bengal growing at 8.4% in the current financial year. I want to leave these numbers here because when we are doing this growth in Bengal, it is not a divisive growth. It is an inclusive growth. Everybody has taken along. And so let me just finish, then you can share. I'm just in the middle of a thought. It is because you had a good governor for 3 years. Go ahead. Yes, sir. Let me confirm, sir, that's the only reason all this happened. I only don't want to add 3 points. So I gave you the growth number. I want to take one other number of one social sector view. On our view, the Trinamool view, because they win and we win, and the BJP view. And I'll give you one more economic number, sir, and then I'll give you the social sector. On the All India Index of Industrial Production, the national average 22-23 is 5%, and Bengal's growth on this has been 8%. So this is the economy. And I'll end with one more example. As I said, it's just one example on the outlook. You have your Beti Bachao program. And in the outreach for that program, about 80% of your budget for the program is for publicity and advertising. My question is, will this government and the answer tell us how many women's lives were actually touched by this program? In Bengal, which the United Nations acknowledged, we have a program called Kanyashree. If you ask me how many lives were touched, I will give you an exact number. 78 lakh women benefited. Sir, I'll conclude by saying that yes, you win, we win. You have a view on the economy. We have a different view on the economy. And there's even another very, very big difference between who you are and who we are, because we also believe that no one can worship God either in a mosque or in a church or in a big temple, or love his neighbor on an empty stomach. Thank you, sir.
Honorable members, I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Sudhanshu Trivedi. माननीय 25 सभापति minutes. महोदय, Dr. Trivedi, 25 minutes. Your time starts there. Go ahead. माननीय सभापति महोदय, आज हम देश के आर्थिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में एकत्र हैं और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष हम निकालने में सफल होंगे और व्यर्थ की बातों से बचने का प्रयास करेंगे। यह भी एक सत्य है कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था वैश्विक है। आज कोविड के समाप्त होने के बाद और विश्व के कुछ हिस्सों में युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, चूंकि आज स्वाभाविक रूप से कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया में होता रहे। मेरे विचार से उस संदर्भ में हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करेंगे तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में, जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयारी नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं हैं, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर, 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था The success story of India is not over. Success story of India is waiting for Modi ji to come into power. और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं।
तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है? मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब ये सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानवीय बात है, वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है, उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके, घरेलू सामान खरीदने से लेके, बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी स्लोइंग, द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पहले कहता था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड एमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर एंड देयर आर ओनली अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज यूएस एंड इंडिया, सेज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। A working paper released in April 2023 says, stacking up the benefits lessons from the Indian digital journey। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने भारत को एक नए स्वरूप में पहुंचाया है। और इसीलिए यह कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यह केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर आपने देखा कि लास्ट मंथ में फिच ने अपनी रेटिंग भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी। इसीलिए मैं सिर्फ मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन कर रहा हूं। यह दर्शाता है कि दुनिया किस हालात में है और मोदी जी के नेतृत्व में हम किस हालात में हैं, इसे समझने की जरूरत है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारी वित्तीय नीतियां बहुत सार्थक और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बजट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। रेल, रोड, पोर्ट्स बने। गरीब कल्याण के लिए चाहे 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान धन देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अनाज देने की जरूरत पड़ी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसकी क्या जरूरत थी। मान्यवर, जब सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी, अगर आप किसी को पैसा दे देते तो वो चीज की व्यवस्था करता कहां से, इसलिए वो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था थी। और अगर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में 58.4 हुआ है, जो कि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट है पिछले 13 वर्षों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 28 कंसेक्यूटिव मंथ में वो बढ़ता हुआ 50.5 है अक्टूबर 2023 में। और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में
11% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर 2023 में। अब मैं अपने विपक्ष के सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है तो मानी हुई बात है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा होगा, इसी कारण से यह दिखाई पड़ रहा है। सितंबर 2023 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.8% की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो अगस्त के अनुसार, अगस्त की तुलना से अगर पूरे देखें तो विगत 14 महीनों में सबसे अधिक है। अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो अक्टूबर में 9.43% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, जो $62.26 बिलियन के आसपास पहुंचा है। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट में हम 22% की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अक्टूबर 2023 का डाटा है। परंतु हम आए किस चुनौती से, यह भी ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो चुनौती ये थी कि उस जमाने में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंकों को जो लोन दिए गए थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एनपीए 2014-15 के टाइम में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अब आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ भी आगे बढ़ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं इस संदर्भ में एक कोट करना चाहता हूं, मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार, बाद में हमारी सरकार में भी रहे, 2018 में अपने एक साक्षात्कार में रघुराम राजन जी ने कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बॉम्ब ऑन मोदी वन रिजीम, इवन दो द राजन सेड दैट द लेंडिंग बैंक्स ऑफ 2006 to 8 was the origin of the bad loans which was in the यूपीए गवर्नमेंट। ये रघुराम राजन जी ने कहा कि 2006 से 8 के बीच में जो बैड लोन्स दिए गए उसके लिए भले ही आज, और ये नवंबर 2018 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, उसमें आया है। इसलिए हमने आज स्थिति ये की कि जन जन तक उस धन को पहुंचाया, उसको सुरक्षित किया और जन कल्याणकारी कार्यों में उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्जित किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। यानी कहां वो बैड लोन्स में दबे जा रहे थे और कहां वो रिकॉर्ड प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जिसके बारे में भी मात्र चंद महीने पहले की तो बात है, जो कहा जाता था कि साहब ये खराब हो गया, डूब गया, वगैरह वगैरह, आज स्थिति यह है कि एसबीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडिया एंड एज पर द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2033-34 SBI has earned a profit of 18,537 crores। यानी ये जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के हिसाब से ये सबसे अधिक आया है। और कहां हम कर्ज के अंधेरे में डूबे थे और आज मोदी जी ने उसे कर्ज के अंधेरे से निकालकर बैंकिंग व्यवस्था को जन कल्याण के सवेरे तक लाने में सफलता हासिल की है। और अगर हम पिछले समय में देखें तो ट्विन बैलेंस शीट जो बैंक्स एडॉप्ट करते थे वो अपने आप में एक समस्या थी, परंतु वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, उस कारण से अब ये ट्विन बैलेंस शीट एक नए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हम 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत 1500 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का केंद्र बनता जा रहा है। नाउ मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल सर्विसेज, ये डेलॉयट ने 2003 में कहा है। और हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को रिपील किया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के कारण जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो समाप्त हुई। और जहां तक गरीबी और पॉवर्टी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, द रिलेटिव रिडक्शन फ्रॉम 2015-16 to 2019-21 was faster, it is 11.9% year as compared to the previous time। यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीबी उन्मूलन बहुत तेज गति से हुआ। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आईएमएफ का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज मेंटेन्ड बिलो 1% इन 2022 बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी वो साफ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई उस कारण से, जिसको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर गरीबी कहते हैं, वो 1% से नीचे पे आई है। अब
आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने अभी कहा है, एक साल पहले उन्होंने कहा, इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द ब्राइट स्पॉट एंड अदरवाइज द डार्क होरिजन बिकॉज इट हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस ग्रोथ इज अंडरपिन्ड बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। यानी आईएमएफ चीफ ये बात की तस्दीक कर रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आधारभूत संरचनागत परिवर्तन हुए उसी कारण से भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उसको देखते हुए भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से महंगाई पर सबसे बेहतर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर नोएल क्विन, हु इज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द HSBC, और ये उन्होंने 2022 में कहा। मैंने इसीलिए सिर्फ वो बातें कोट करने का प्रयास किया जिनके की द्वारा ये समझा जा सके कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मैं एक कोट करना चाहता हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिज नेम इज माइकल स्पेंस, जिन्होंने 2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ regime change today. India is outstanding performer now. It's a powerhouse of digital and life science realms. It is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective. अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता दिस इज द हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है, एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय
भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए हैं। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात धर्मात तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। श्री
P. Chidambaram. Sir, 10 minutes. Thank you, sir. More than enough. Sir, after listening to the learned professor of Lucknow University, I'm sure that all of us are convinced that Amrit Kal has begun. And by going the number of times he was applauded by the treasury benches, I think he should be in line for a ministership now. I wish him well. If all is well in the world and God is in his heaven and India is growing at the fastest rate in the world, why is the impact of that growth not felt on the ground? This is the question which my friend Derek asked, and I try to supplement that in the few minutes I have. We are a large economy. We are growing at the fastest rate in the world. We are innovative. We have the largest FDI coming into the country. But why is it not seen on the ground? And I specifically want to ask, why is it not seen in the inflation numbers and the unemployment numbers? Let's take only those two. Now, what are the unemployment numbers? And I'm going by official numbers. The government doesn't like the CMIE numbers, so we'll avoid the CMIE numbers. Mercifully, the BJP no longer talks about 2 crore jobs being created every year. Thank you for small mercies that you are not making these tall claims. That's one of the election jumlas. I didn't know the word jumla unless I heard it first from the Honorable Home Minister. Now let's focus on a few numbers. This is official numbers of the Periodic Labour Survey. The worker population rate in this country is 46%, which means the number of workers to the population is 46. It's quite low, but let's take it as acceptable given the various circumstances of the country. Of the worker population, that is 46% of the total population, male worker population is 69%, but the female is only 22%. Of the worker population, less than 50% actually work. So if you apply 50% on 46%, effectively it means only that 23% of the people work. This has more or less been constant in the last 9.5 years of the BJP government. Now, why, I ask, if we have such scintillating growth, why is this numbers not improving? Now, my learned friend Derek O'Brien gave the numbers. In the age group 15 to 24, the unemployment rate is 23.22. Among graduates under the age of 25, the unemployment rate is 42%. Graduates between the year 25 to 29, it is still 23%. Graduates between the years of 30 to 34, it is close to 10%. It's 9.8%. A graduate in this country, and I spoke at a college, I said, I'm not frightening you, but you will graduate here. But unfortunately, 1 out of 4 will be unemployed.
And even until the age of 35, 1 out of 10 will be unemployed. Why is this spirited growth, scintillating growth, not turning into jobs? That's the first question I'm asking. And keep in mind, most employment in this country is self-employment, 57%. Regular wage employees has declined from 24% to 21%. Apart from the quantity, the quality of employment is also poor. So I want the government to answer, why is this 10-year splendid period not reflecting in employment figures? The second one is about price rise. And on price rise, yes, inflation has come down in the last couple of months. I'm not disputing that. But please remember that even today, the CPI inflation is above the tolerance limit of 4 to 6% of the RBI. Food and light inflation is 4.3. Fuel and light inflation is 4.3. Food inflation is 9.2. What does the combination of high unemployment and high prices, what does it mean? It means that, and I think Derek hinted at that, it means that there is a cut, the impact will be felt in the cut in domestic consumption, cut in household consumption. The impact is you borrow more. Credit growth is driven in this country, according to the RBI, on personal loans and gold loans. The net financial assets of households has plummeted to the lowest level, 5.1%. What does this mean? It means that people are consuming less, people are borrowing more, they are liquidating their household assets and savings, and the net financial savings has come down to a historical low, a 50-year low of 5.1%. It also shows up elsewhere. It shows up, for example, in matters like child malnutrition. I'll just give you the numbers of child malnutrition, and are shocking numbers. They're shocking numbers of child malnutrition. Today, among children, you will find that 16.3% of children are undernourished, 19.3% of children are wasted, 35.5% of children are stunted. It shows up again in the food that the children get. And add to that Derek's numbers, under the age of 5, so many people die because of hunger. Why is it not showing up in consumption? It also shows up in education. Their mental growth. Today, in a class 8, only 70% of the children can read a class 2 text. And only 45% of children can do basic arithmetic. In class 8, you can't do basic arithmetic, you can't read a class 2 text. So ultimately, the question is, who is this government for? Is it for the poor, or is its policy so skewed that it is in favor of the rich? The numbers are undisputed. I have not seen a single government spokesman dispute these numbers. 23 crore people of India are poor when the poverty bar is very low. Poverty bar is 1,286 rupees per month per person in urban areas and 1,089 rupees per month
per person in rural areas. With such a low poverty such a low poverty bar, 23 crore people are poor. And it shows up in inequality. The bottom 50% owns 3% of national wealth and gets 13% of the national income. And the top 5% owns 60% of national wealth, and top 1% holds 22% of the national income. So ultimately, this growth is unacceptable. This kind of growth is unacceptable. We need more balanced growth. But then I end with the final question that I've been asking the government for many, many months, for which I have not got an answer. I hope I will get an answer today. In 91-92, India's GDP was 25 lakh crore. In 12 years, in 2003-04, it doubled to 50 lakh crore, doubled. In 10 years, under UPA, it doubled to 100 lakh crore, 25 to 50 to 100. I ask one simple question. If you are growing at such a fast rate, such a record-breaking rate, will you, when you end your term today in 2023-24, will 100 lakh crore become 200 lakh crore? The Finance Minister, Honorable Finance Minister, knows the answer. I know the answer. You know the answer. But I want the Honorable Finance Minister, to say the answer is known to the Finance Minister, the former Finance Minister. I'm out of it. Whether the GDP will double in their Amrit Kal period under the NDA government, will it grow to 200 lakh crore by March 2024? And I want the Honorable Finance Minister to answer that question. Thank you, sir. Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Chairman, sir. 9 minutes. Yes, sir. Honorable Chairman, sir. I'm wondering the timing of the discussion on the economic situation in the country. In today's Hindu business headlines, we had a headline stating that Indian banks writes off rupees 10.6 lakh crore in 5 years, and 50% of that is being linked to the large corporates. This is how the corporates gets their freebies, is one thing which we have to make a note. India's DGP crosses $4 trillion for the first time. Sir, there is no doubt the Indian economy is growing. India is set to outspace Japan and Germany shortly as the fastest growing economy in the country. And the government also claims that the GST collections has touched a record high, but always Tamil Nadu has got the brunt of not getting it back what we give it to the Indian government. But the pertinent question of whether the fruits of the GDP growth has reached India's poor and lower middle class. No, the government has failed miserably in managing the economy. What is the use of boasting that India's foreign exchange reserves have increased? Indian economy grows faster than US economy with 7.6% GDP growth when 80% of the population is suffering in poverty. It's not a boon, it's a curse. US is 37.5 trillion economy with a population of 33 crore, but India's population is 142 crores. In terms of per capita GDP, India ranks 139th in the world, and India's external debt is 172 lakh crores. India has witnessed a surge in private debt, especially in the corporate and the household sectors, due to the easy credit availability and low interest rate. During the UPA's 10-year rule, only rupees 2.20 lakh crore was written off. For a kind information, as of now, the Indian banks have written off as rupees 10.6 lakh crore in the 5 years. However, this also possesses a risk of default and financial instability, especially if the income growth slows down or the interest rates rise. According to the Reserve Bank of India,
the total non-financial sector debt was 167% of the GDP in March 2020, up to 151% in March 2016. India has a high level of income and wealth inequality, which has increased over the time. According to the World Inequality Database, the top 10% of income earners accounted for 56% of national income in 2019, up from 37% in 1980. Similarly, the top 10% of wealth holders owned 77% of total wealth in 2019, up from 66% in 2000. High inequality can lead to social unrest, political instability, and lower economic growth. Unemployment rate has touched 10%. The unemployment of youth aged between 18 to 25 is touched abnormally low to 25%. Only a very small percentage of people are lucky to get a regular employment in government and private companies. Sir, more than 40 lakh government jobs are vacant, and the government has promised to create 2 crore new jobs every year, could not fill even 10 lakh vacant jobs. Too much emphasis on privatization of government and public sector companies will destroy the social structure of the country. The reservation system followed in our country is indispensable for upholding social justice and removing inequality. Reservations are not provided in any private sector, and if the governments keep on privatizing the reservation system, will derail and the social justice and equitable distribution of wealth is under threat. Therefore, I urge the government to introduce a bill to provide reservation in the private sector before it sells everything. This government behaves like a good salesman, but not a good Samaritan. The economic disparity and the social inequality is witnessing a worst phase in independent India. When the world thrives on dollar economy, the continuous fall in the value of Indian rupee against US dollar can do a lot of bad than good. My senior colleagues in Treasury benches criticized vehemently the then government's failure to provide a stable rupee in 2013. You have promised to people of India that when you come to power, you will stabilize the value of Indian rupee against US dollar and bring the value of $1 to rupees 40. What happened after your government captured the power in 2014 is a history known to everyone. Our Honorable Finance Minister has even said in public Indian rupee is falling, only US dollar is raising. This is a candid statement accepting the failure of the government to stabilize the value of Indian rupee against the US dollar. Due to the extreme rupee-dollar rate fluctuations, India's nominal GDP affects badly. The export gain is lost by a mile through import loss. The value of India's import is much higher than export. The widening gap in trade deficit is not good for any country. India is no exception. Our country's trade deficit with other countries, especially China, is going to affect the Indian economy very much. Too much dependence on imports from China will destroy the prospects of indigenous manufacturing and development. I think the warning bell is ringing. It's a wake-up call for the government to reduce the country's over-dependence on China in importing. Another time bomb of our country is facing at the moment is the escalating prices of the essential commodities and food items. The World Economic Forum predicts that the cost of living crisis sparkled by fluid and food price hikes will hit women the most. The rising prices have hit almost everyone, either it be a milkman, a fish vendor, an auto or a taxi driver, or the pensioners. All are affected very badly, but the union government is still having a blind eye to the precarious situation in the country right now it is in. Transportation cost has gone up by 20 to 30% due to the steep hike in the prices of petrol, diesel, and CNG. It is causing a ripple effect on the vegetable prices. The steep hike in the CNG prices had made life miserable for the auto and cab drivers. CNG is now sold over rupees 69 per kg. We demand the government should provide rupees 35 per kg subsidy on the CNG so that they can survive. The agriculture sector is the backbone of our country. Nearly 70% of the total population thrives on agriculture and agro-based activities. The government once claimed that it will double the farmers' income has done too little to save the life of the farmers of this country. The increasing incident of farmers committing suicide is a national shame. The government should address the needs of the farmers as a top priority because the whole country depends on them. If the government can't stop its farmers committing suicide, if the government can't uphold social justice and socio-economic equality,
if the government cannot control the escalating prices of essential commodities, if the government can't provide employment opportunities for 1/3 of its youth population, if the government can't provide affordable health care to its poor citizens, there is no point in boasting that our country is fastest growing economy in the world. Sir, among the Indian states, Tamil Nadu is the second largest economy and third largest exporting state, contributing 9% to the India's net exports. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, the Industries Department of Government of Tamil Nadu is taking several proactive measures as several foreign companies interested in signing agreement with TIDCO, an industrial arm of the Government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 179 projects at a cost of rupees 8.6 lakh crore relating to Tamil Nadu has been included in the National Infrastructure Pipeline. These projects will be implemented in the next 5 years. Thus, Tamil Nadu is emerging fast as a champion economy and advanced industrial state in the country. I urge the government to allocate adequate funds and to provide all necessary support to Tamil Nadu to release an unprecedented growth and pinnacle of success in economic growth, industrial development, and employment generation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimozhi ji.